ओ, तो मेरा माइक ऑफ था। ओके, दैट गुड टू नो। जल्दी जल्दी पता चल गया, अच्छा हो गया। तो मेरा माइक ऑफ था। बोलो कुछ, वॉइस। हाँ बोला तो, ओनली 1 मिनट और वेट। नहीं, 1 मिनट भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आ गया मैं। आ गई हो। लॉल। यस यस, मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता ही नहीं था। बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ ऐसे जिनसी गेम पे। अबे सेटिंग्स, राइट, अभी डाउनलोड किया ना, जुगाड़ करना पड़ेगा सेटिंग्स का। कुछ सेटिंग्स ठीक करो फर्स्ट। तो ये रोटेटिंग, स्टोरी, ऑटो प्ले और कंट्रोल, कंट्रोल की बाइंडिंग में वॉक को चेंज करके शिफ्ट, ताकि वो माइनक्राफ्ट से के साथ जो है एकदम साथ साथ हो जाए। भाई मेरे चैनल 200 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन यार अगर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अच्छा अब ठीक है। वैसे सब कुछ ठीक मिक से आ रहा है ना? चलो, नाइट बोर्ड आ गया। नो रिवाइवल आइटम, लॉल, मैं उसको मार के बैठा हूँ। लेट्स गो टू देयर। लॉल, दो वाचिंग। हाँ, उम्मीद ऐसा ही था। उम्मीद ऐसा ही था, हमको हमको कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं था, क्योंकि पता है सबको माइनक्राफ्ट ही देखना है और किसी को कुछ नहीं देखना है। मनोज, मनोज, यो मनोज। यहाँ पे सब माइनक्राफ्ट के पुजारी है, यहाँ पे कोई जिनसिंग इम्पैक्ट नहीं देखेगा। कोई बा भाई, कोई बा, कोई बा, व्हाट दैट? समझ नहीं आया कुछ। सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मैं शायद इस पे नहीं खेलता था। ओए गिर जाऊंगा रे। पार हो जा, पार हो जा। स्ट्रीम एलिमेंट भी आ गया। ओके, दैट्स गुड टू नो। दोनों आ गए, मैं देखूंगा बिकॉज मैं माइनक्राफ्ट अभी छोड़ चुका हूँ। लॉल, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम देखोगे। नॉट फॉर कि तुम माइनक्राफ्ट छोड़ चुके हो। और ये मेरा पिंग इतना खराब क्यों है? ओह नो, ये वाला फिर से। मेरा पिंग बहुत खतरनाक है। लॉल, एम आई 12 ग्रेड। यो, हैप्पी होली। यस यार, सबको हैप्पी होली। ब्रो, माइनक्राफ्ट का 1.19 वर्जन कब आएगा? आई डोंट नो मैम, तुमको क्या मोजांग का कोई डेवलपर लगता हो कि मुझे पता होगा? वैसे ये क्यों वापस आ गया? कहाँ गया ये रहा? पॉकेशन का कंट्रोल चेंज, हाँ या पता है। गया। जीटीओ खेलेंगे तो फिर शायद बहुत लोग देखेंगे, क्या पता। नहीं, मेरे चैनल में लोग मुझे माइनक्राफ्ट खेलते हुए देखने आना चाहते हैं, ये और बाकी गेम्स नहीं। और मेरा इतना पिंग खराब क्यों है? अरे ये गेम क्यों खेल रहे हो? देखो मैंने बोला ना, अभी अभी बोला ना। ऐसा ही है। मैं पाकिस्तान से हूँ। भाई कैसे हो वैसे? आप इंडिया में से कहाँ से हो? मैं इंडिया में से वेस्ट बंगाल से हूँ, और तुम पाकिस्तान में से कहाँ से हो?
6 लोग देख रहे हैं भाई, खतरनाक बात है वैसे। मिस्टर बीस्ट चैट्स हाय यार। इनको क्या हो गया? There's no such thing as perfect plans where you are unlimited how come? अबे ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है लॉल। Need to prepare for anything। अच्छा ओके। ब्रो आई रीच 1K सब्सक्राइबर रिसेंटली, कांग्रेचुलेशंस यार। अबे ये छोड़ो, सबको सब कुछ है, कौन पड़ेगा इसका, जो होगा देखा जाएगा। ओके करना क्या है? क्लियर आउट द मॉन्स्टर कैंप। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कर सकता हूँ मैं। ओ ये मार पड़ गया, मार पड़ गई हो। खत्म, यही था क्वेस्ट। इस गेम में क्या करना होता है? ओपन वर्ल्ड गेम है लाइक जीटीए। यहाँ पे कुछ क्वेस्ट होते हैं, वो सब कंप्लीट करने पड़ते हैं बस, और कुछ नहीं। वैसे गेम बहुत बढ़िया है। वैसे मूड नहीं है देखने का। हाँ तो अब तुम देखोगे या नहीं? मैं तो ऐसे ही स्ट्रीम पे आ गया। थोड़ा नया नया गेम भी खेलने चाहिए। नया नया वैसे नहीं है, ये पुराना ही है, पर फिर भी। पीसी में खेले या फिर मोबाइल में, ये दोनों में अवेलेबल है। तुम पीसी में खेलना चाहते हो तो पीसी में खेलो, मोबाइल में खेलना चाहते हो तो मोबाइल में खेलो, सब में अवेलेबल है। Oh, what do you like to eat? GTA 5 खेलोगे? GTA 5 तो खरीदना पड़ता है, कहाँ से खेलूंगा? खरीदना पड़ेगा ना, उससे अच्छा मैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक ना खरीद लूं GTA खरीदने से अच्छा। और क्रैक मैं करना चाहता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हॉरर गेम्स खेलो। हॉरर गेम्स कौन कौन से गेम्स का कुछ नाम बताओ, मेरे को उतना हॉरर गेम्स के बारे में पता नहीं है। I keep watch. You leave, you call me. ग्रैनी 3 वो तो मोबाइल का है। ओके खेलेंगे, वो भी खेलेंगे, वो भी खेलेंगे। ग्रैनी 3 भी खेलेंगे। मूड नहीं आ रहा है क्योंकि अभी 100 MB बचा है और स्ट्रीम देखने में नेट खत्म हो जाएगा। हाँ इसलिए तो बोला, तुम्हारी मर्जी भाई, क्या बोल रहे हो। प्ले इट लाइव, ओके जरूर। एंड रूइन गार्ड मेरे पीछे पड़ गया। ये एक चीज मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। डे लाइट क्या 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 क्या? वेट, अबे मरा मैं। भाई ये लैग मरवाएगा। हेलो नेबर, हाँ वो भी सुना है, अच्छा है। ना ना ना, अवॉइड 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 अवॉइड। भागो 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 भागो। अबे यार ठोक रहा है मेरे को। नो प्रमोशन, यस नो प्रमोशन, सही है।
9 पीपल वॉचिंग, नॉट बैड। हाँ ये सही है। हेलो, मैं सनो। आप इंडिया में कहाँ से हो? मैंने बोला तो मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ भाई, थोड़ी देर पहले ही तो बोला। वहां पे कैसे चढ़ू? वो लेना पड़ेगा, चढ़ने के लिए यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये? अबे चल ले ऊपर। हैप्पी होली। यस यार, तुम लोगों को भी हैप्पी होली। आज होली का दिन था तो पुराना माइनक्राफ्ट कितनी बार खेलूं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया खेल लेते हैं। अबे चल ले। ओके, अच्छा है। Smell of treasure. लगा कि Strange. माइनक्राफ्ट की जगह पे कुछ खेलना चाहिए तो आ गया। सुबह को ही डाउनलोड किया था जिनसिंग इम्पैक्ट, और यहाँ ऊपर से क्या व्यू, क्या ही व्यू दिखता है, क्या ही व्यू दिखता है, एकदम खतरनाक वाला। खतरनाक वाला व्यू दिखता है I यहाँ से। smell rabbit. और कहाँ पे कमीशन है? यहाँ पे एक और है। लेट्स गो देयर, व्हाई नॉट। वेट, अपना मेरा एक दोस्त कॉल कर रहा है, मैं उससे बात कर लूँ थोड़ा सा। हो गया। लॉल, वेयर इज माइनक्राफ्ट? अबे हर दिन माइनक्राफ्ट खेलने में अच्छा लगता है, तो आज सोचा माइनक्राफ्ट से कुछ अलग हो जाए। और मेरा ये पिकिंग इतना खराब क्यों है? स्ट्रीम के वजह से आई थिंक। भागो। ओके, ये तो गया। माउस काम नहीं कर रहा है। अबे माउस काम कर। हाँ, काम किया। लोएस्ट क्वालिटी पे नहीं। अबे यार, खुद को ही डैमेज दे देता हूँ मैं तो। Nice and spicy. ये वाला कमीशन भी खत्म। प्ले ग्रैनी 3। भाई एक बार बोल दिया, सुन लिया मैंने। जरूर खेला जाएगा। साउंड थोड़ा सा गेम का घटा दूं, ज्यादा आ रहा होगा, पता नहीं, आ भी सकता है। हो गया। फनी शॉट्स, हाँ यार। वहां पे एक चेस्ट दिख रहा है, लेट्स गो फॉर दैट। MI12 रेड, क्या हुआ तुमको?
Who made you the intro in your video? Did you made it? Nope. एक बंदा था, उसका नाम आई थिंक गेमर बॉय था, उसने बना के दिया था। वाओ, सिंगल हिट में खत्म। पावरफुल। Empty chest. Good for storage. मारू क्या? क्या मेरे को मारोगे? उतना हिम्मत है तुम में? है हिम्मत उतना तुम में? नहीं है। हे सुब्रायन, पोके एपिसोड। हेलो यार, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए पोके एपिसोड। रिमेम्बर मी? यस। खाना खाओ, बट वाई? क्या लड़कियों वाला गेम खेल रहे हो? अरे भाई, खुद खेल के देखो, उसके बाद ना, उसके बाद बोलने आना लड़कियों वाला गेम है। खुद खेल के देख लो। तुमको पता नहीं है कि गेम क्या है नहीं है, तुम पहले ही बोल रहे हो लड़कियों वाला गेम खेल रहे हो। मैं आऊं इस गेम में? आ जाओ। दिस गेम इज ऑसम। यस यार, माइनक्राफ्ट के जैसा उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी कंपेयर टू अदर गेम्स ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अबे यार, अबे यार, क्या मार रहा है? बहुत अमेजिंग गेम है। हाँ, मुझे तो पता है, उसको समझाओ। मल्टीप्लेयर होता है ऑब्वियसली, यस। Ready, steady, break! You're toast! रुको, आता हूँ। ओके, मोबाइल में भी है, पीसी में भी है, दोनों में है। तुम जिसमें चाहो उसमें डाउनलोड करके आ जाओ। ब्रो रिप्लाई मी, कैन आई प्ले विथ यू? ऑब्वियसली यस। आ जाओ, अगर तुम्हारे अभी तुम्हें अभी मुझे आईडी दे सकते हो तो आ जाओ। एशिया में हूँ मैं, तो ये वाला देख के, क्योंकि मल्टी सर्वर में खेला नहीं जा सकता है। भाई लैग हो रहा है। हाँ, गेम तो लैग होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। लैग फिक्स करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब वॉइस लैग हो रहा है क्या? एफपीएस, एफपीएस ठीक है, एफपीएस होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। डीबग दिखाओ। I keep watch. You leave, you go. आरबी, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा आईडी है, वेट। आर बी ए, आर बी ए जे ए जेड 98। यूजर आईडी डोंट एग्जिस्ट। सही से लिखा। आर बी ए जे, आर बी ए जे ए जेड 98, ए जेड 98। ब्रो माई गेम टैग इज आर बी ए जे ए जेड 98। अबे, तुम एशिया के सर्वर में नहीं होगे, तुम किसी दूसरे सर्वर पे होगे, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ए जे ए जेड, हाँ लिखा तो था, नहीं लिखा था? देख लेता हूँ। आर बी ए जे ए जेड 98। नोप। एपिक गेम अकाउंट, एपिक गेम अकाउंट नहीं, गेम का आईडी बताओ, गेम का आईडी, गेम का यूजर आईडी ये वाला है, ये वाला यूजर आईडी, ये वाला बताओ।
एक और चेस्ट। Empty chest. Good for storage. माय नेम इज अजज अजज ब्रो, आई विल बिकम ए मेंबर। ओके जरूर। काचा बफ, व्हाट इज काचा बफ? अब है ना, कर क्या है ये काचा बफ? सारा कमीशन कंप्लीट, लेट्स टेक द रिवॉर्ड। वेट, ओके यार, काचा बादाम गाओ। अच्छा, काचा बादाम गाओ। तुम लोग को रोज रोज काचा बादाम, क्या रोज रोज सुनते रहते हो? हाउ टू डाउनलोड दिस गेम? एपिक गेम पे मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर स्ट्रीम पे मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे भी मिल जाएगा। या फिर एपिक गेम क्यों, तुम लोग स्ट्रीम पे अगर सर्च करोगे, स्ट्रीम पे भी मिल जाएगा। स्ट्रीम मतलब कंप्यूटर का गेम जहाँ से डाउनलोड करते हैं वो। आई डोंट थिंक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में है ब्रो। ये गेम तो प्ले स्टोर में है ही नहीं। तुम्हारा मोबाइल शायद सपोर्ट नहीं करेगा। मिनिमम 3 GB रैम का फोन चाहिए होता है इसको खेलने के लिए। बिस्ट एंड वाइटी 30 GB का है। हाँ, 30 GB का है। इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। कंप्लीटली फ्री एज आवर होस्ट सुब्रायन। यस, ये गेम कंप्लीटली फ्री है। वैसे मैं बाहर क्यों आ गया? अब उनको रिवॉर्ड कलेक्ट करना था। 30 GB का है। हाँ भाई, 30 GB का है। अब अच्छा ग्राफिक्स है तो 30 GB का तो बनता है। ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। यो, कैसे हो? मैं हूँ कोलकाता से, तो मुझे भी बंगाली पता है। काचा बादाम का, बट आई हैव 4 GB रैम। तब ठीक से क्लिक करके देखो, ठीक ठीक से तुमने शायद लिखा नहीं होगा। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. लॉल 3 मिनट में डाउनलोड होगा। 3 मिनट में डाउनलोड होगा। आ, क्या बोल रहे हो? योर फोन नेम, मेरा फोन का नाम है Redmi 7। गलती से व्हाट्सएप ऑन कर दिया, नहीं चाहिए डेली Thank you कमीशन। for completing today's commissions. Here is your reward. और उसके अलावा Ad Astra Abyssosk. वो মাইনিং का भी तो है। তুমি ভালো আছো? यस, আমি অবভিয়াসলি ভালো আছি। इसको फिर से भेज दो। काया को भेज दो। काया को जितना मैनुअल लेवल करवाए उतना अच्छा है। कितने रैम है आपके फोन में? मेरे रैम में 3 GB है। मेरे फोन में चल जाता है, फिर भी 3 GB में भी चल जाता है। बहुत बड़ा है पर अच्छा है। ভাইয়া তুমি তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ, আমি তো ভালো আছি। हे ब्रो, पीसी स्पेक्स दिखाओ। मेरा पीसी में 8 GB रैम है, 1 TB का स्टोरेज है, और उसके साथ साथ i3 है इंटेल का, और उसके अलावा AMD का एक ग्राफिक्स कार्ड है। AMD का एड्रियन, आई थिंक ग्राफिक्स कार्ड का जो नाम है। लूसीफर द डेविल, यो लूसीफर, वेलकम टू द स्ट्रीम। यू आर मुस्लिम? नो यार, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। लेट्स डू सम क्वेस्टिंग टाइम। पीसी ले लिए? नोप। इवेंट में क्या क्वेस्ट आया है? इवेंट वाले क्वेस्ट करते हैं। लेट्स डू दिस। ये कुछ कुछ क्वेस्ट तो आया है, यही वाला करते हैं। फेस्टिवल कब करोगे? कब का कर दिया? अरे यार, कितने अच्छे पीसी है। डीएम ऑन डिस्कॉर्ड में आपको टिप्स दे दूंगा फॉर बूस्टिंग। ओके, हैप्पी होली। यस यार, हैप्पी होली। तुम लोगों को भी हैप्पी होली। I'm hungry. Let's hunt. ट्राई आउटलास्ट। ओके यार, ट्राई करूंगा। मच्छर,
क्या करूँ, क्वेस्ट करूँ या फिर क्या करूँ, तुम लोग बताओ। भाई माइनक्राफ्ट खेलते हो यार? हाँ हाँ, माइनक्राफ्ट का ही तो चैनल है अपने का। अगर इसलिए तो देखो ना, माइनक्राफ्ट की जगह पे कोई और गेम खेल रहा हो तो ये हालत है, इतना कम व्यूज जा रही है। आई एम मुस्लिम। ओके यार, अच्छी बात है वो। होली में कितने कलर और पॉटी से मेरे की रोना निकल गया मेरा। हो भाई। जावा, जावा फिर पॉकेट एडिशन। पॉकेट एडिशन भी खेलता हूँ, जावा भी खेलता हूँ, दोनों खेलता हूँ। गाना गाओ ना। क्या गाना गाए? एक मिनट, मॉन्स्टैट पे घूम के कोई फायदा नहीं है। चलते हैं इनाजुमा पे, इनाजुमा पे घूम के फायदा है वैसे। मेरा कैसा एपिक गेम से सर अकाउंट से क्या एआई गेम। काचा बादाम, व्हाट डिड यू मीन बाय लॉल? किसको बोल रहे हो? गाना, पूरा गाना आता ही नहीं है मेरे को। व्हाट्स दैट? पैर तोड़ा हाथेर वाला, उसके बाद क्या था मेरे को याद नहीं है। अबे इनाजुमा लोड ले ले। हाँ, लोड ले लिया। कितना टाइम लगाता है यार। কাঁচা বাদাম, ইয়েস কাঁচা বাদামই তো হুয়া। পায়ের তোড়া হাতের বালা, তাকে যদি সিটি গোলেছেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। इतना अच्छा गाना है ना। ओके, लेट गो टू डियर, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जब मैंने गेम खेलना छोड़ा था, आई थिंक वो फायरवर्क्स वाले फायरवर्क्स वाले क्वेस्ट पे था, तो आई थिंक वही वाला कंटिन्यू होगा। पोके एपिसोड भाई, लॉल क्यों बोला मुझे समझ नहीं आया। ओ अच्छा, उसको बोल रहे हो? मुझे लगा मेरे को बोल रहे हो। क्या करना है? आस्क दी लोकल्स। ओके, तो ये भी एक लोकल है, इसको भी पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। नोप, आई विश यू गुड लक। तो कोई कुछ कुछ पूछना नहीं है। किसको पूछना है? अच्छा, इनको पूछना है। Gotta think of a way to save Konda Village. सुब्रायन, फाइनली क्या हुआ? आई कैन प्ले दिस इन क्लाउड गेम्स? आई डोंट थिंक सो। पीसी ले लिए? नहीं यार, अभी मेरा खुद का पीसी नहीं है, दोस्त का पीसी है। मैं लोकल, किस लोकल से बात करूं? याद ही तो नहीं है कहाँ पे क्वेश्चन चल रहा था। ये है लोकल? नहीं, ये तो मार मार पिटाई का है, लोकल नहीं है। पिंग बहुत खराब है यार। आई कांट डाउनलोड इट बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा है। हाँ भाई, इसका साइज सच में बहुत बड़ा है। आई कैन टोटली गेट इट ब्रो। पर तुम देख सकते हो वैसे, स्ट्रीम देख सकते हो, उस पर भी तुमको पता चल जाएगा गेम क्या है नहीं है। इससे बात करना है? इवर नहीं, आई थिंक इससे बात नहीं करना था।
हिंदी में मत लिखो, मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता है। ओके, इसी से बात करना था। आ जाना है अभी। आस्क द लोकल्स फॉर इंफॉर्मेशन। फिर से सेम, किन लोकल को पूछूं? अभी तो लग रहा है दूसरा क्वेस्ट करना चाहिए था। ब्रो डिड यू प्ले जिनसिंग इम्पैक्ट? हाँ देखो भाई, जिनसिंग इम्पैक्ट ही तो खेल रहा हूँ। ये वाला तो नहीं हो सकता, तो ये वाला देखते हैं क्या है, कहाँ है। और वहाँ पे डबल डबल वो भी है, देखते हैं कहाँ पे है जाके। ये दोनों कहाँ है वैसे? दो होना चाहिए यहाँ पे। एक तो यहाँ पे होना चाहिए जो कि ऑब्वियसली नहीं है, और दूसरा यहाँ पे उसके अंदर। कैसे गया हुआ ऐसे? अभी माइनक्राफ्ट का वीडियो में व्यू आते हैं अच्छे। हाँ इसलिए तो ज़्यादा यहाँ पे माइनक्राफ्ट ही चलता है। ये तो आज अचानक मर्जी हुआ कि लेट्स डू इट, तो कर रहे हैं। नाइट बॉट वाई? अरे नाइट बॉट ऐसा करता रहता है। क्या किया वैसे नाइट बॉट ने? भाई माइनक्राफ्ट नहीं खेल सकता ना सारा दिन। हाँ ये भी सही है कई हद तक। ये वाला क्वेस्ट कहाँ है? यहाँ पे। इसके लिए इसको अनलॉक करना पड़ेगा। हम्म। अबे बंद हो। लेट्स गो देयर। ये वाला लेना पड़ेगा मेरे को। ये वाला अगर ना लूँ तो भी चल जाएगा आई थिंक। हेलो भाई, कैसे हो मिस्टर इरफान यार? वेलकम टू द स्ट्रीम। ये वाला लेने से भी काम चला जाएगा वैसे। लेट्स गो देयर। लिंक दे रहा है नाइट बॉट। नाइट बॉट वो मेरा दूसरा चैनल का है, सेकंड चैनल है। वहाँ पे होना चाहिए कि इफ यू लाइक एनिमे रिकॉर्डिंग देन यू कैन आल्सो चेक आउट दिस चैनल। पर नाइट बॉट को तो नाइट बॉट है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक दे रहा है, पता नहीं, मतलब सिर्फ लिंक ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। GTA गेम प्ले? GTA खरीदना पड़ता है यार, और कहाँ ये गेम फ्री है। यहाँ जाना है मेरे को, यहाँ। वॉइस लैक बाय बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले दिस गेम। ओके ठीक है, जाओ। लेट्स गो टू न्यू आइलैंड। वहाँ पे एक और वो शैमुराई टाइप का है। प्ले फोर्टनाइट? आई डोंट थिंक फोर्टनाइट जो है चलेगा इस पे। चल भी सकता है वैसे, कुछ पता नहीं। इट्स फ्री। हाँ फोर्टनाइट फ्री है पता है, पर चलेगा या नहीं ये तो सबसे बड़ी बात है ना। इन एपिक गेम्स माई फोर्टनाइट गेमर टैग इज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलेगा नहीं। हाँ इसलिए तो नहीं खेलता मैं।
कल लाइव होगा भाई, माइनक्राफ्ट का होगा, ये आज के लिए ही है। जेंसिंग इम्पैक्ट एक दिन के लिए ही है, माइनक्राफ्ट तो रोज का है। घुसने नहीं देगा मेरे को, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हेलो बाय। ओ भाई, आए और गए एक साथ, क्या बात है। ओके एपिसोड बाय, ओके यार बाय। एंड ये यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं कोई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, व्हाट्स दैट, ओ भाई, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। अगर मैं वहां पे गया, मेरे को जला फला तो नहीं देगा ना। ओ भाई, मेरे ऊपर गिरता अभी। भागो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके भागो। भाग ले यहाँ से, पूरा सामने ही है। अगर एक नंबर ग्राफिक्स, यस ये गेम मेरी भी, मैं भी खेलता हूँ। हाँ भाई अच्छा है वैसे ये गेम, बट कभी समझ नहीं आता कि चलता क्या है इस गेम में। भाई ये क्या है सामने मेरे, जाऊंगा तो मार तो नहीं देगा ना। खोलो इसको। गेमर टैग दिस गेम, भाई तुम मेरे को दे दो, तो भी तो एक ही बात होगा ना। ओके लेट्स गो टू द क्वेस्टेरिया नाउ। तुम मेरे को आईडी दे दो, मैं जो है आ जाता हूँ। लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू। वर्शिप स्टैचू, अभी स्टैचू को वर्शिप करने का कुछ है नहीं मेरे पास। वो उतना ऊपर कैसे, उतना ऊपर मैं कैसे जाऊं। अच्छा उड़ उड़ के जा सकता हूँ आई थिंक। फिर से बोट लो, फिर से वापस। ओ व्यू पॉइंट, वहां पे व्यू एरिया है, व्यू पॉइंट व्यू पॉइंट, दैट्स अ गुड वन। बट यहाँ पे वो, बाय ब्रो, लव यू फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू यार। निकल यार। भाई कौन ऐसे पार्क करता है गाड़ी को। अरे निकल नहीं रहा है भाई। निकल जा यार, निकल जा निकल जा। घूम जा 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 घूम जा। थोड़ा सा और चल, अभी निकल जाऊंगा, आराम से निकल जाऊंगा। ओ भाई पहुंच गया, मेरे को तो लगा मैं वहीं पे फंस गया। सब लोग जा रही है, जाने दो यार, सबको तो पसंद नहीं होता ना। जो सब मेरे को पसंद होगा वो सबको पसंद होगा, ये कोई जरूरी बात है।
ट्विस्ट ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। स्क्रीन मिरर कौन से ऐप से कर रहे हो? ये फोन का नहीं, ये पीसी का गेम है यार। फोन का पीसी का दोनों में ही है, मतलब फोन में भी है पीसी में भी है, दोनों में ही गेम अवेलेबल है। पर मैं खेल रहा हूँ अभी पीसी में। कोई वॉइस एक्टिंग क्यों नहीं है? लॉल। मैं कौन से ऐप से करो? पीसी में ओबीएस से कर लेना, ओबीएस से हो जाएगा। बस विंडोड विंडोड मोड में खेलना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडोड मोड छोड़ के जो है ये गेम कैप्चर नहीं होता है। ये वाला पे कोई वॉइस एक्टिंग नहीं है, नहीं करेगा अपन। वर्ल्ड क्विज ये वाला, चलो लेट्स डू दिस वन। भाई आपके पास कोई बेडरॉक का एसएमपी है? पॉकेट एडिशन का है यार एक। उस पे बेडरॉक वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। मोबाइल टू लैपटॉप ओबीएस से, हाँ ओबीएस से। ओबीएस स्क्रैपी है तो उससे हो जाएगा। हाँ चलेगा। मेरा नेटवर्क बकवास है, घूम रहा है। अच्छा अच्छा, पता नहीं ये वैसे स्ट्रीम तो ठीक से चल रहा है ना? आई डोंट नो, स्ट्रीम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स डू सम क्वेस्टिंग। ये आई थिंक फायर क्रैकर वाला क्वेस्ट है, आई Sorry, थिंक। official business. I हाँ, can't let you pass. फायरवर्क्स वाला। Secretary K-Scare up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Ugh, what a nuisance! Well, you've only got yourself to blame. ओ भाई आते ही फाइटिंग क्वेस्टिंग में, क्वेस्टिंग प्लस फाइटिंग। गया। ओ अभी बाकी है एक और। सो प्लीज कोई हो मुझे বেঙ্গলিতে কথা বলো। ওকে ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি বাংলায় কথা বলবো, বাট বলবোটা কি? मिस्टर एस जी, ओ भाई। Withdraw. Come on, we can do it. अबे 5 क्लिक करना था। अब सही है, जो मन चाहे बोलो। ओ भाई हो गया हो गया। How dare you impede the work of the Tenryou Commission? You will be punished for your actions. There is nowhere you can escape justice, not even at the edges of the world. Look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. আবে হিন্দিতে Let's push কথা on. বলছো? They should be আরে just यार, ahead. অভ্যাস হয়ে গেছে স্ট্রিমে হিন্দিতে কথা বলতে বলতে, আর কিছুই না। There is he. Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. भाई प्लीज, You क्या should हुआ? have known that you क्यों लो? stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands.
अभी मुझे If याद आ this रहा है is to धीरे be my धीरे fate, धीरे धीरे याद I आ रहा है accept it. ये बंदा इनाजुमा से I have भागना चाहता nothing था else to say. बिकॉज इसको But अपने your ये return अपने says that you finally came around to my point of view. आई एम बैक Whatever यो you वेलकम say. बैक You will return with me to the Tenryo Commission to await your sentencing. The one who তো made বলো this boat আমার will also be সোনার বাংলা punished. আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসी कोई It doesn't एसएमपी have में to ऐड end करो like this. एसएमपी में आके Don't you have तुमको anything else to डिस्कॉर्ड say पे to आना one पड़ेगा और another? डिस्कॉर्ड पे आके तुमको जो इंटरव्यू I देना know पड़ेगा you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. अबे हिंदी It's okay, लॉल Mia. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been আমার waiting ফালতু for. বাংলা হোয়াট To talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryo Commission. There was never any room for discussion. Out of respect for the friendship we अभी once आओ had, I gave him a chance ओके to fight आ for सकते his हो freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever डिस्कॉर्ड were. पे ओके ओके What are सॉरी you talking लॉल about? And just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say. डिस्कॉर्ड में जा But रहा you're हूँ just gonna choose to keep it all पर inside. डिस्कॉर्ड में जाके मेरे को क्या मतलब तुमको तो जाके वहां पे बात Fine, करना पड़ेगा What would you know? You and Mia, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, भाई you क्या seem हुआ to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly वो why you came मल्टीटास्क back. नहीं कर No सकता matter what the consequences are, you have to tell him everything. If you don't say anything खुद now, जीते you will never have जतक another दो chance. कुछ जता दो And कुछ if you जता दो lose? ब्रांड बॉट नहीं है Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryo Commission's punishment. You and Mia. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up. Back up? Duels are supposed to be one-on-one! Alright, that's it! Let's help you and Mia! We can't let her fight them all alone! Take this! Here! Bellowing thunder! Time for a light show! I must withdraw. Came back! I must withdraw. खत्म हा। मतलब रिस्पेक्ट ओ अच्छा अच्छा इज्जत Sir, they are too strong. We need more men. Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. এখন Yes, sir. ডিসকর্ডে গিয়ে কি Sorry. করব Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each एसएमपी তে other. জয়েন হবো এসএমপি তে জয়েন হতে গেলে তো ইন্টারভিউটা দিতে হবে না Do they? ये तो इंटरव्यूটা আমি নেব না না The reason I came back is that I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind. I just felt that what I'd done in the past ফেস রিভিল was to করবে না try to ফেস রিভিল তো escape from কবে হয়ে reality. গেছে I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue,
the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about the Sakoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the What good things video? from the outside world আরেকটা and আছে bring না, them back home. একটা কিউএনএ ভিডিও আছে, So ওই that's কিউএনএ why you came ভিডিওটাতে। back? Out of your naive hope of changing the way things are here. No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that I never should have run away like that. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I পূজা couldn't লঞ্চের ignore 1 GB it any র্যামে longer. চলবে? নেই, না না না। Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryo Commission. I do wonder, am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but you live up to the family name. By the way, Naganohara fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakujiro ordered a firework from me, didn't I? I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. It'd be a shame for it to go to waste, so I'll make an exception and let you set it off instead. Thank you very much. No worries. And don't miss out on the start of the fireworks show. Yoimiya! The way you took command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My pops will set off the firework that I wanted to give to you.
One day, we'll showcase innocence fireworks. One day, we'll showcase innocence fireworks to all of Tibet. Oh, it's... Keisuke. So, Yumiya, these fireworks, what do they mean to you? Yumiya? Shh. Huh? Oh. Oh, that was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it. It was one of the best ones. They won't forget that anytime soon. That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If you ever want to see that golden firework again, just come and see me. You know, Yumiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. Quietly watching something you made with your own hands rise into the sky feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage.
And for Keisuke and Sakajiro, they were commemorating... Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. Also, consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. I keep watch. You leave, you call me. What do you think this is, kiddo? A fruit juice store? How rude! Especially since we're here to help! Help? Oh, yes. You're the acting grandmaster's new hotshot helper, aren't you? That's one way of putting it, but... Great. Tell Jean I need my quarterly tax return forms then. It's time to get Elzer on to doing the accounts again. I must say, though, the tax rate on alcohol in Mondstadt is pretty steep. Acting Grandmaster Jean personally goes over all the accounts. After all, the wine industry is Mondstadt's main source of income. Jean takes great pains to make sure no detail is overlooked. Paimon never knew that. Jean's job is even harder than it seems. The acting Grandmaster's hard work indeed makes our lives a whole lot easier. We're certainly very lucky, but to put it bluntly, we just take it for granted that that's the norm now. Wow. How do you sleep at night knowing how much pressure you put Jean under? When you put it like that, I do feel quite ashamed. I suppose I should give her one on the house next time she's here. Although, I doubt the acting Grandmaster even has the time to spare for that. Sounds like a poor excuse to deny Jean a free drink. Come on, let's go and see Jean. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Wine. Protect you. Jules from Leeway. Come take a look. Ancient Alchemy.
Hey, you two! Margaret? What are you doing here? My cat's gone missing. Have you seen it? This is a bit worrying. What if Prince can't find his way home? But we're on our way to an urgent meeting with Jean. Sorry. You're on the way to see Jean? What a coincidence! Paimon thought you were looking for a cat. Yes, I wanted to see if Jean could help look for my cat. Seriously? You want Jean to help look for your cat? What's wrong with that? Jean's a really nice person. Please mention it to Jean from me. I'll treat you to a brew at Cat's Tail later. Hey! Hey! Ugh, unbelievable! Guess the case of Prince the Missing Cat is now added to the agenda for our meeting with Jean. That doesn't sound very good. Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. Yes, it has been one thing after another recently. Neither myself nor any of the Mondstadt garrison are able to catch a moment of peace. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. The Fatui? Again? Oh, but who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Oh, Paimon gets it! So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter. Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the Honorary Knight.
You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Whoa, leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach him calmly, then things should go off without a hitch. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support you.
Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? Paimon thinks so too. We've seen plenty of hilly trails before, and they're always the bad guys. But this is different. Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. Oh, the guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Let's go take care of them. These super evil hilly trolls are more difficult to defeat than the usual kind, too. Hey! Seems like people are gathering over there. Oh, wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? He scared off all the hilly trolls. Oh, you mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is kind of similar to the one that he wears. But the magic he was using seemed even more adeptus-y than Xiao's. Shall we go say hi? Ahem. Hello. Allow us to introduce ourselves. This is... Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil is the duty of the Adepti. Think nothing of it. One certainly doesn't. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems that we... My name's Paimon, and this is my sidekick. One sees. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars, though one is better known to one's followers as Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Now, tell me that which you wish for. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Leeli were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. Have you seen the Master of Stars in action? His power truly hails from the divine. I believe that now there is finally some hope for my ailing father. Watching him use his magic is all the proof you need. A true Adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. My father will recover soon, I just know it. Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an Adeptus like the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right? The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was.
Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of an Adeptus is a monumental affair. Just look at the Rite of Dissension. So I can accept it, but I doubt that most from outside of Liyue would be willing to. Finally, a life full of hope and Oh, are you believers too? After my fiancé had been left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean at sunrise. I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking trick. I'm certain of it. I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting my fiancé back, in which case I wouldn't need it anyway. What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak from the heart. Surely you jest. There was once a senior adeptus, Xie Wuliang, known to the people as Liangzi. He said this: all things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Does this make things clearer? Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. Ah, got it. Now then, what are your wishes? One senses that a tragic tale lies behind this wish. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you fail to perceive one's hidden meaning, then regrettably, one may lend you no aid. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right! Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over anymore, and we don't have anything valuable enough on us. You don't even have a vision. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good food, can they? Yep, a tasty snack is sure to work. Why don't we head over to Wanwen Bookhouse and see if they got any new recipes in?
So, are you buying or not? So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? Really? What's so fishy about him? Huh. That's a good point. None of the other Adepti we've met seemed like they needed anything from anyone. Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that desk over there. This is the one! Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. This book is about the Yakshas, a group of Adepti who defend Liyue. Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you?
So, there used to be 5 main yakshas, but supposedly only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly churls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. It's so tragic. After everything they went through in all of their years of protecting Lille, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayan Karst and let the truth shine through in its full glory. To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. His exorcism techniques seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Alright, let's head back to Wangshu Inn! Flee at my command, foul demons! Flee! Why won't you flee? Uh-oh, looks like Star Snatcher's in trouble. And there are innocent bystanders here too. We have to step in. Keep back! Oh, I don't get it. Why didn't the Sigil of Permission do anything? Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of Permission, huh? Now why does that sound familiar? Right! It's a keepsake of the Adepti, so it must still contain traces of their power! No wonder he was able to scare those monsters away earlier! What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power
is not in full flow. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you then? One suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. So you were just bragging after all. We were right to be suspicious. Come on, Traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down. Oh, it's that Conqueror of Demons again. No wonder. Paimon was just wondering who could have made such short work of these hilly churls. Let's see what a real Adeptus has to say. It's you. I remember you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. Huh? He isn't usually this polite. What's going on? But you are exorcising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? Does that mean... Yeah, Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? So that means... Oh... Poor Xiao! I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, I'm sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with you! We'll be a big help! Paimon promises! No need. I'm used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh! Consider it Paimon's penance for being accidentally rude just now. Please? Well, come on then. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I have come to accept this. But in recent years, other living things have suffered, when the burden should be mine alone to bear. I must reflect on this.